So the next topic is crossing the river problems. Now, what is meant by crossing the river problem? अरे रिवर क्रॉस करना है तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? तो प्रॉब्लम ये है कि उतना इजी नहीं है. यू नो जो स्टीमर चलाते हैं, स्टीमर क्रॉस से रिवर क्रॉस करते हैं ना, हाँ फ्लो, रिवर फ्लो के कारण ना फ्लो को बहुत अच्छे से स्टीयर करना पड़ता है. अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दिया ना, बहुत जोर का जाके जेटी के साथ धक्का लगता है, या बहुत धीरे धक्का लगता है, या जोर से धक्का लगता है, या जेटी पे पहुंच नहीं पाता. जेटी is the place where the thing, and it's like a station. Port is a huge thing. Jetty is a small place. ठीक है सर? केवल listen very carefully. क्या हो रहा है? Crossing the river problem में दो तरीका हो सकता है. एक है for least time. For least time. जब भी लीस्ट टाइम लगाना है, मतलब रिवर क्रॉस करना है मुझे, लेकिन मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, लीस्ट टाइम में क्रॉस करना है, तब क्रॉस करने के लिए जो डायरेक्शन में जाना पड़ता है, मुक्ता बंद रखबे, तब रिवर क्रॉस करने के लिए जो डायरेक्शन में जाना पड़ता है, that is exactly perpendicular to the river. If the river is flowing in this direction, say this is the velocity of the river, and say this is the boat or swimmer or anything is given who is crossing the river, उसका velocity अगर vb है, तो क्या होता है? Exactly perpendicular direction में steer करता है. तो अगर exactly perpendicular direction में steer करता है, तो क्या वो exactly perpendicular के opposite point में पहुंच पाएगा? क्या होगा? रिवर से इधर धक्का देगा, इधर में धक्का देगा रिवर, तो ये कहाँ पहुंचेगा? राइट, यहाँ पर पहुंचेगा. कहाँ पर पहुंचेगा? लेफ्ट में या राइट? Right. So it will drift a little towards the right. क्यों? क्योंकि ये जो इन दोनों का जो resultant velocity होगा, उस resultant velocity का direction में वो मूव करेगा और वो यहाँ पर आके पहुंचेगा. So दिखने में लगेगा कि वो ज़्यादा distance travel कर रहा है, लेकिन actually में उसका time सबसे कम लगता है ये situation. हाँ? हाँ. हाँ, actually वो दिखे मूव হ্যাঁ সেটাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমাকে লিস্ট টাইমে রিভারটাকে ক্রস করতে হবে. আই ওয়ান্ট টু ক্রস, তার কোনো মানে নেই, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ক্রস দ্য रिवर इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. बीबी निकालना पड़ेगा. क्या बीबी निकाल, हाँ मैंने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली. ना बीबी है रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी a wind or river crossing problem में resultant velocity one. So this is the direction of what? Is the direction of the resultant velocity. Say this is v, resultant velocity v. So the distance cover kore, distance से बेशी cover करते हैं, but time will be least. Sir जो water current की right दिखे अच्छा तो right दिखे obviously ताले दिखे चलेगा. obviously যেদিকে water current कभी चलेगा least টা bar की cover করতে की least টা bar करते हैं, least time देखे. हाँ ताले সেটা জন্য আমাদের এই distance টা cover করতে হবে. এই distance টা river এর width টা যদি আমরা d নিয়ে, if d is the width of the river, তাহলে time taken will be distance by ac, vt. distance by v. তাহলে সমস্যাটা perpendicular, right? perpendicular যে velocity টা আছে সেটা বাস. जल्दी से लिखो एक बार, write this down. If the heading crossing the river problem for least time, let the velocity of river be. Sir এখানে কি স্পিড বেড়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ স্পিড বেড়ে যাচ্ছে. Let the velocity of the river be vr and the velocity of boat be vb. The width of river be d. For least time, the boat should be steered perpendicular to the river. Boat should be steered perpendicular to the river. Time taken to cross is equal to d by velocity of boat.
Now you might have a question, okay, sir, why am I doing d by velocity of boat? Why? Because it is not traveling this distance. It is actually traveling this part of the distance, right? So we should find out this distance and divide it by v. But actually, can I say that this is a motion in two dimension? And you know we can solve motion in two dimension by breaking it up into two one dimensions. So actually, ये बोट जो है वो इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, right? And the resultant motion is like this. So that means उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा, उसको यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट होने में भी उतना ही टाइम लगा, as well as यहाँ से यहाँ तक आने में भी regarding. So अगर हम लोग कोई भी एक टाइम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा, लेकिन जो वाला डिस्टेंस से टाइम निकालेंगे हम लोग को उसी डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है वो से डिवाइड करना है। मतलब अगर हम लोग ये वाला डिस्टेंस से टाइम निकालना चाहते हैं तो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, v है, so it will be v by v. Clear? Yes, yes or no? হ্যাঁ, সেই জন্য আমরা ওই ডাইরেকশনে কত কম্পোনেন্ট আছে ভেলোসিটি, দ্যাট ইজ vv itself, সেটা দিয়ে ডিভাইড করব। Is that clear? All right. Now there is one more question that is asked. How much is the drift? Drift कौन सा है कि यहाँ से जहाँ पर पहुँचना चाहिए था वहाँ पर नहीं पहुँचे तो कितना डिस्टेंस राइट में जाएगा? This is called the drift. Drift. ठीक है सर? तो drift का बात को पुट करें. Drift along the current is equal to what? It is the distance. कोई डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन है, who was the velocity? Vr. So Vr is responsible for this movement, but it did it in the same time, right? अब velocity अगर हम लोगों को मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी जल्दी बोलो, वेलोसिटी और टाइम मालूम है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? तो তাহলে ভেলোসিটিটা হচ্ছে vr আর টাইমটা হচ্ছে this whole, right? velocity into time that will give you the drift. समझ में क्या समझ में आया? आया? चलिए d by o अच्छा नीचे o अच्छा well, the next situation is for least distance. So for least distance, the boat needs to steer in such a way that it reaches exactly opposite. So can we really steer along this direction? No. Along this direction? Along this direction. Right, upstream. He will need to incline upstream. Means जिधर river flow कर रहा है उससे थोड़ा slightly पीछे वाला direction में direct करना पड़ेगा. Okay, वही point पे पहुंचता है. Right. ताले if the boat directs along this direction, VV is along this direction, then the river will push it towards the right and it will finally reach this point. So at every point you will see the boat will be like this. बोट ऐसा रहेगा, मतलब वो ऐसे सीधा डायरेक्टेड नहीं रहेगा, ऐसे डायरेक्टेड होकर पूरा सीधा क्रॉस करेगा। बट सर ये देखते नहीं जाएगा सीधा उस पर जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन भी जिधर डायरेक्टेड है उस डायरेक्शन में रहेगा, उस डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहेगा लेकिन जाएगा। सर आसपास में भी ये हाँ बट सर এটা কার পাশ থেকে যে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ গ্রাউন্ড যে নদীতে থাকবে যে নদীতে থাকবে তার পার্সপেক্টিভে তো মনে হবে যেন এটা পেছনে থেকে যাচ্ছে, মানে এদিকে থেকে যাচ্ছে, ওদিকে ফ্লো করে চলে যাবে, এদিকে এটা এদিকে চলে যাবে, সাঁতার কাটছে আচ্ছা লেটস কাম ব্যাক। লিসেন, যেটা বলছি একটু মনে রাখুন। সো ফর লিস্ট ডিসটেন্স what happens, it should be inclined along this direction. Now tell me mathematically, why should we incline along this direction? Say the incline makes an angle of theta with the upstream. Then this VB will have two components, one along this direction, another along this direction. So if this angle is theta, what will be the component along this direction? VB cos theta. हम लोग सीखते हैं जो डायरेक्शन रहेगा उस डायरेक्शन में cos component और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में क्या रहेगा? VB sin theta. बिल्कुल ये समझ में आया ना क्यों हुआ? ये cos theta ये sin theta. So what will VB cos theta do? VB cos theta will balance the river current. VB cos theta drift के balance करेगा. It will not allow the drift. VB cos theta will balance the river current completely.
and VB sin theta will make the boat cross the. So write this down. For least distance, the boat should be steered at an angle theta with respect to upstream. Okay, theta with respect to upstream. Theta with respect to river current मत बोलना. Opposite to river current के respect में theta angle करना. So theta with respect to upstream. Then VB cos theta will balance the river current and VB sin theta will make the boat cross the river. VB sin theta will make the boat cross the river. Sin theta will make the boat cross the river. VB sin theta will make the boat cross the river. Alright? So tell me, VB cos theta will balance the river current. इसका मतलब क्या है? Right. VB cos theta is equal to VR. So यहाँ से हम लोग को cos theta मिल जाएगा. VR by और अगर हम लोग को डायरेक्शन पूछेगा तो हम लोग को थीटा चाहिए होगा. So that will be cos inverse of VR by. Okay. So the direction will be given by this one. Cos inverse of এটা শুধু VR কেন বললেন? কোনটা? ড্রিফট বলে তো VR ইনটু d বাই ব্যালেন্স করে দিস না। अरे यार ওটা কি ওটা ডিসটেন্স ড্রিফটটা তো ডিসটেন্স আচ্ছা আর এটা কি ভেলোসিটির ইকুয়েশন তো একদিকে ভেলোসিটি আর একদিকে ডিসটেন্স ওকে ঠিক আছে ড্রিফটটাকে ব্যালেন্স করছে না ও রিভার কারেন্টটাকে ব্যালেন্স করছে সেটা কারেন্ট হলো ভেলোসিটি it balances the drift লিখেছি তো আপনি না it balances the river current ঠিক আছে আচ্ছা আর VB sin theta made it cross the river so what is the time taken to cross the river time taken to cross the river will be that's d by VB sin theta अच्छा time taken to cross the river is given by t equal to d by VB sin theta ये डिस्टेंस फिर से d ले रहा है सेम थिंग d divided by VB sin theta you understand why VB sin theta and not VB yes sir यहाँ पर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ बोट होना चाहिए था ना लेकिन हम लोग बोट इनटू sin थीटा क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये जो VB sin थीटा है सिर्फ यही कंपोनेंट इसको क्रॉस कर रहा है पूरा वेलोसिटी ऑफ बोट इसको क्रॉस नहीं कर रहा है होना है इसलिए d by VB sin is that clear yes sir fair enough let's do a sum so question number 15a it says that a swimmer speed is velocity of swimmer is 2 km and velocity of the river is 1 km per hour and if the river flows 1 km per hour and the river is wide 1 km wide d is also 1 km. First part of the question is saying find the direction you must take and the time you will require to reach a point on the other bank directly opposite of the starting point. So directly opposite means shortest distance part. So shortest distance part, if you want to find out the direction, then you remember cos theta should be equal to what? Cos theta should be equal to right. Actually VB cos theta should be equal to VR. So VB cos theta equal to VR means cos theta equal to VR by VB. And that is cos theta equal to VR is 1 by 2. So theta equal to how much? 60 degree. So we should direct 60 degree upstream. Alright, now they want to find out the time. So how do you find out the time? Time equal to distance by speed. So distance is d and the speed which is covering it is VB sin theta only. So that's why d by VB sin theta. So d कितना है बोलो? 1 किलोमीटर and VB कितना है? 2 sin 60 degree.
So sin 60 degree is how much? 1 by root 3 order. Sin 60 is root 3 by 2. So this will be 1 by 2 into root 3 by 2, which is 1 by root 3. So 0.577 hours. 1 by root 3 hours. 1 by root 3 hours. Whatever value comes out, you can simplify it. नहीं 1 by root 3 नहीं रखेंगे. तो इसको root 3 इसको root 3 by 3 कर लेंगे. root 3 is 1.732 by 3. इतना hours आएगा. तो into 60 कर देंगे तो minutes में आ जाएगा. So 1.732 into 20 minutes. 34.2 minutes. 34.2 minutes. It's given in the answer. What about the second part? Second part क्या करेंगे बताओ? Time taken to these Motion in body is simplest formula. So if we swim straight across the river, find how long will they cross the take and at what point on the opposite bank will we reach. मतलब we have to also find out the drift. मतलब time of motion भी निकालना पड़ेगा और drift भी निकालना पड़ेगा. Second वाला part पढ़ो एक बार. First part हो गया सब लोगों का. मतलब तो होएगा समझ मतलब. Second part है कि बोले थे जे if he swims direct straight, swim straight. So swim straight means what? Swim straight means he will be directed along this direction, velocity of swimmer, but finally he will reach this point. Okay? So first they wanted to find out the time taken. The time taken in this case we have studied it will be d by bs. That is dv. वहाँ पर फॉर्मूला लिख लिए थे d by dv होगा. ठीक है? So distance कितना है 1 किलोमीटर और velocity of swimmer कितना है 2 किलोमीटर पर आवर. So it will be 1 by 2 hour. That is, in this case, it will be 30 minutes. So you can understand why this is shortest time situation. Last वाले में 32 point something मिला था ना? कितना था? 34 point something मिला था. लेकिन इसमें 30 minutes मतलब उससे कम टाइम लगेगा. ठीक है? लेकिन वो अपना ठीक opposite point में नहीं reach कर पाएगा. It will be drifted along the river a certain distance. So कितना drift होगा उसका बताओ? Drift is equal to ये जो टाइम है इसको हम लोग उसका रिवर करंट का वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है? तो रिवर करंट का वेलोसिटी vr into t. रिवर करंट का वेलोसिटी कितना आएगा 1 किलोमीटर पर आवर. So 1 किलोमीटर पर आवर into half. So that is 0.5. half kilometer. 0.5 kilometer along the river. The foreign question का बोलो. ना 17 का बोलो. फॉर क्वेश्चन का होगा Water is still. হ্যাঁ মানে স্টিল ওয়াটারে যে মানে যখন সুইমার বা বোটের ভেলোসিটি বলা থাকে না সেটা স্টিল ওয়াটারে বলা হয়. Still water में तो velocity होता है. তাহলে তো স্টিল ওয়াটারে যদি ভেলোসিটি না বলে তাহলে তুমি বোটের অ্যাকচুয়াল ভেলোসিটি বুঝতে পারবে না. বোটের অ্যাকচুয়াল ভেলোসিটিটা সব সময় স্টিল ওয়াটার. With respect বাস সুইমারের ভেলোসিটিটা স্টিল ওয়াটারে. রিভারে ঢুকলে তখন আমরা এই জিনিসগুলো রাখবো এক্সট্রা কনসেপ্টস. বুঝা গেছে? হ্যাঁ নেক্সট 17 जल्दी से बताओ कैसे करेंगे. आप कुछ बोलो सब पढ़ेंगे. तो जिधर तुम्हारा माइंड सेट है जो सिचुएशन समय राइट में लिए तो वही लेकर सोचना डिफरेंट करना पड़ेगा. Okay, question number 17 it says that we have a man who crosses a river in a boat. If he crosses the river in a minimum time of 10 minutes, so minimum time of 10 minutes means minimum time situation. The time taken is equal to distance by velocity of boat, right? So time 10 minutes is 10 into 60 equal to d by dv. This is equation 1. And they're saying we could drift 120 meters. So you know the formula for drift? Formula for drift is equal to d by dv into vr. So obviously drift 120 दिया हुआ है, d by dv is 600 into vr. So of course you get vr from here. 120 by 600, so that is 0.2 meter per second. And this equation 2 actually. And the third data is given. If he crosses the river taking shortest path, so this is now the shortest situation. The second situation takes 12.5 minutes. So
शॉर्टेस्ट सिचुएशन के लिए टाइम टेकन इज इक्वल टू डी बाई वीबी साइन थीटा था, आया ना? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हाँ, so this will be 12.5 into 60 equal to d by dv. अब देखो d by dv हम लोग निकाल चुके हैं ना 600, तो sin थीटा क्या होना चाहिए? 600 divided by 12.5 into 60 and 20 by 25 that is 4 by 5. So मिल गया क्या sin थीटा? sin थीटा का 4 by 5 है, हम लोग को मालूम है cos थीटा 3 by 5 होता है. अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या था बताओ? VR by VB, right? Because in one situation कर रहे हैं हम लोग shortest path situation कर रहे हैं. shortest path situation में क्या था? cos थीटा equal to VR by VB होता है. cos थीटा का वाला मिल गया ना? So 3 by 5 equal to VR निकाल चुके थे हम लोग. 0.2 by VB. तो निकल गया VR, VB निकल गया. VB equal 0.2 into 5 by 3. That is 1 by 3. मीटर पर सेकंड. अब VB VR निकल गया है, VB यहाँ डाल दो, D निकल जाएगा. समझ में आया? Yes or no?